Yes, here it is, the entropy change, right? We were talking about entropy in the last class. You can see this, that entropy is actually the disorder of the system, the randomness of the system, and we know that by dissolving solids into the water, we can create disorderness in the system. So it is showing the increase in entropy, and increase in entropy is always positive, right? And we know that change in state can also produce the disorderness in the system. So it is also can be positive and can be negative, because if solid is going to convert into liquid or solid is going to convert into gaseous state, that means disorder is going to be increased. So that is actually entropy increases. So it will be positive. If we are coming back to the state, solid state or liquid state, that means it is the decrement in the entropy, which should be negative in sign, right? Then we know that if we are going to decompose any carbonate, any nitrate, that means it is going to produce the gaseous moles over there. And whenever we are going to have gaseous moles in the product, that means the entropy is going to be increased, because गैस की एंट्रोपीज बहुत ज्यादा होती हैं, उनका डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है. आपने 9th क्लास से ये बात पढ़ी है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अंदर. When you talk about solids, then the particles are tightly packed, they are closely packed, they are having high force of attraction, like they are orderly arranged. These things आपने सब पढ़े. उसके बाद आपने पढ़ा था गैस के particles, they are far apart from each other, they move randomly, continuously, they always in motion. These all things are with gases, and the same over here as well. When you talk about solid to gas, you just look at over here, this is a solid and it is forming gases. Solid particle था, आपके पास solid कोई substance था, उसके particles करीब करीब थे. जब particles करीब करीब थे तो definitely वो डिसऑर्डर नहीं था, वो ऑर्डरली अरेंज पार्टिकल थे. बट जब आपके पास गैस बन रही है तो डेफिनेटली पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हैं, डिसऑर्डरली अरेंज हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं. तो इट इज शोइंग द इंक्रीमेंट इन द एंट्रोपी एंड इट इज पॉजिटिव. Then definitely when we increase the temperature, the kinetic energy of the particles increases, they move with greater energy. It is also one of the reason or one of the thing which can increase the entropy of the system if you increase the temperature, right? So these are the 4 things we talk about this in the yesterday's class. Then you see the rules, how can we predict the entropy change. These are very simple. If the number of moles on the reactant side are lesser and the product side is greater number of moles of gases, that means entropy is going to increase and the sign will be positive. If the number of moles are lower on the product side, and you can say that number of moles of gases are lower at the product side, you can say that entropy decreases and it is negative. हमने इसकी बात कल की थी. और अगर दोनों तरफ मोल्स एक जैसे हों तो एंट्रोपी would be approximately equal to the previous one, right? उसके अलावा अगर एक्वासाइंस हों तो एक्वासाइंस जहाँ ज्यादा होंगे वहाँ एंट्रोपी डिफरेंस ज्यादा होगा. ये हमने सिर्फ प्रेडिक्ट किया था. अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही तो साइन पॉजिटिव, अगर डिक्रीज हो रही तो साइन नेगेटिव. नाउ वी कैन इवन कैलकुलेट एग्जैक्टली the number of entropy change, कितना चेंज हुआ है. we can even find it out this, right? It's very easy, very very easy. अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है तो देखिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है समीशन, यानी सम ऑफ ऑल एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ ऑल एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये रिएक्शन है तो आप देख सकते हो, अगर आपको इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स की एंट्रोपीज को सम करेंगे. सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर सिर्फ NH3 ही है, right? So NH3 की entropy, and we have 2 molecules of NH3 over here in this reaction, so we need to multiply it with 2. ये हो गई product की. Then we need to subtract the entropies of reactant from here. So you can see this entropy of nitrogen, and it is a single mole, so it's only 1. Then plus 3 moles of entropy of hydrogen. This is all, right? Just put the values and get the answer. This is the very simplest thing. In A2, it will give you 2 marks in the final paper. It asks multiple times, right? And it will give you 2 marks for this calculation. So, bachcho, this is, for example, if you talk about 2 moles of ammonia, 2 into 193 minus the sum of all reactants entropy. So it is 192 plus 3 into 131. It will give you this. And when you solve this, it will give you minus 199 kilojoules per mole per Kelvin, right? यूनिट याद रखना है, जूल्स है आपके पास, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स. ठीक है बच्चों, इसको आप देख लीजिए अपने पास. दूसरा ये कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप यहाँ देख सकते हो
कि आपके पास रिएक्शन कौन सा है, यहाँ पर आपके पास 1 मोल और 3 मोल, 4 मोल है गैसेस के, यहाँ पर 2 मोल है। तो आप देख के भी बता सकते हो आपका आंसर सही है या नहीं है। डेफिनेटली आपका आंसर सही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट साइड पे कम है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट साइड पे कम होंगे, सो वी नो दैट एंट्रोपी क्या हो रही है, इसका मतलब इस रिएक्शन में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंड द साइन शुड बी नेगेटिव। और देखें आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपने सही किया है या नहीं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल है ना, ये आप आराम से निकाल सकते हो इसकी कैलकुलेशन। जल्दी से मुझे इसकी कैलकुलेशन करके दिखाओ, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि मैं चेक करूं। Now, spontaneity. Now, this is something, the reaction which is going to be spontaneous and the reaction which is going to be non-spontaneous. You need to understand this, that spontaneous reactions are such reactions that occur self by self, right? खुद ब खुद अगर reaction हो जाए, self reactions are actually spontaneous reactions. कोई reaction अगर खुद ब खुद हो रहा है, that means it is a spontaneous reaction. जैसे for example, if you talk about spontaneous reactions are like melting. For example, अगर आपने अपने फ्रिज में से एक आइस का पीस निकाल कर अगर आपने बाहर रख दिया है, तो आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे हो, वो सराउंडिंग से खुद एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। आपने नहीं कहा उसको करो, या आप रोक नहीं सकते उसको, वो खुद ब खुद ही कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो खुद एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी और वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, दैट मींस देयर इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट इज सेल्फ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, समंदर से पानी अगर भाप बनकर उड़ रहा है और बारिश में कन्वर्ट हो रहा है, सो बादलों में जाकर बारिश, वो कंडेंस होकर बारिश बरसा रहा है, तो इट इज ऑल लाइक वो खुद हो रहा है, आप नहीं करा रहे, ठीक है ना। सो ऐसे रिएक्शंस जो कि खुद ब खुद हो जाए, वो कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंड वन ऑफ द एग्जांपल ओवर हियर गिवन, दैट sodium is a highly reactive metal. We cannot even put that metal on our palms, right? हम अपने हाथ में भी ले सकते हैं उसको, because the moisture in our hand can react with the sodium and it will be dangerous for us as well. तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम। सो फॉर द स्टोरेज ऑफ सोडियम वी नीड टू यूज ऑयल्स, हम उसको ऑयल में स्टोर करते हैं ताकि वो रिएक्शन ना करे। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू जस्ट put sodium in the atmosphere, you will see that sodium is going to react with oxygen by itself, वो खुद ब खुद ही रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। And also iron can also react with oxygen in the air or in the atmosphere, but it is a slow reaction. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घरों के अंदर विंडोज या डोर्स यूज करते हैं आयरन के, तो वो डेफिनेटली रस्ट लग जाता है उन पे, जैसे बाइसाइकिल की चेन पर लग जाता है, जैसे बाइक्स की चेन पर लग जाता है। तो आयरन की किसी भी चीज पे रस्ट हो जाता है, डेफिनेटली इट विल टेक 6 to 10 months टू बी रस्टेड, लेकिन हो जाता है, रिएक्शन पे भी हो जाता है, वो भी 10 महीने बाद भी, हमने खुद नहीं कराया, वो हो गया। इट इज अ स्लो रिएक्शन, बट इवन slow reaction and fast reaction is not the factor right now. We are talking about spontaneous reaction. कोई सा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहा है, that is spontaneous, right? Slow fast से ताल्लुक नहीं है अभी हमारा। Same as it is, for example, if you just put methane gas with oxygen in the temperature like 25 degree centigrade, room temperature पे अगर आप मीथेन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके रख दें, there will be some reaction, definitely it can make carbon dioxide and water as well. लेकिन जब आप मीथेन को कंबस्ट करते हो, आग लगाते हो, तो this reaction is faster at high temperature, so that is something else. But we are not talking about fast and slow reaction right now, we are just talking about spontaneous reaction or non-spontaneous reaction. So such reactions जो खुद ब खुद हो जाए, they are spontaneous, और जो खुद ब खुद ना हो वो होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्टिलेशन,
और थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह के जो रिएक्शन होते हैं, वो क्रैकिंग हो गई, ये सारी चीजें आप खुद कराते हो, और जब तक आप हीट दे रहे होते हो वो रिएक्शन चल रहा होता है, जहां से आपने हीट रोकी वहां रिएक्शन स्टॉप, आपने इलेक्ट्रिसिटी दोगी, इलेक्ट्रोलिसिस स्टॉप, आगे फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगा। तो आपको जिस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देना पड़े, दे आर एक्चुअली नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे हीट देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी समथिंग जो कि आपको बता सकती है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, और बड़े ही आसान तरीके से वो हमें ये बात बता देती है। नाउ लेट्स सी कि हमें कैसे पता चलता है। जस्ट लुक एट ओवर हियर, दिस इज समथिंग लाइक यूनिवर्स। आपके पास आप एक लैब में काम कर रहे हो, ठीक है ना, जिस लैब में आप काम कर रहे हो उस लैब को हमने कहा है सराउंडिंग, ठीक है ना, और आप जिस बीकर में रिएक्शन करा रहे हो वो बीकर है सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बीकर है जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो, जहां रिएक्शन होता है, जहां जहां रिएक्शन होता है वो सारी चीजें सिस्टम कहलाती है, जहां पर प्रोसेस हो रहा है। तो स्पीकर में प्रोसेस हो रहा है, वहां रिएक्शन हो रहा है, तो वो सिस्टम है। और उसके अलावा हर एक चीज जो आपकी लैब में है वो सराउंडिंग का हिस्सा है, ठीक है। और लैब से जैसे आप बाहर निकल जाते हैं तो वो बाहर से आप कह सकते हैं लैब जो है यूनिवर्स है, यानी कि लैब के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, सिस्टम वो है, और पूरी लैब अंदर से जो है आपके पास सराउंडिंग, और लैब के बाहर जाके आप इशारा करके बता सकते हैं दिस लैब इज द यूनिवर्स। इनके अंदर रिएक्शन हो रहा है और सराउंडिंग भी अंदर ही मौजूद है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क फॉर एनी रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रहा है, फला फला रिएक्शन हो रहा है, इसकी एंट्रोपी चेंज बताएं। तो एंट्रोपी चेंज, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगी वो आप बता सकते हो कैसे, आपको सम करना पड़ेगा सिस्टम के एंट्रोपी चेंज को और सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज को। आपको सम करना पड़ेगा सिस्टम के एनर्जी चेंज को और सराउंडिंग के एनर्जी एंट्रोपी चेंज को, सॉरी एनर्जी बोल रहा हूँ, एंट्रोपी चेंज को, राइट। सो this is actually total entropy is equals to entropy of surrounding and entropy of the system. This is entropy of the system, right? So आपके पास टोटल एंट्रोपी कैसे निकलती है? टोटल एंट्रोपी निकलती है ऐसे कि जब आप सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी को सम करते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम, सराउंडिंग की एंट्रोपी इज द प्रॉब्लम। सिस्टम तो आप जानते हैं, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है? दिस इज द सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस द सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट, ये आपको पता है। तो ये बड़ा आसान है हमारे लिए, हम जहाँ रिएक्शन हो रहा है हम उसकी बात कर लेंगे, उन प्रोडक्ट्स की और उन रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी स्टैंडर्ड होती हैं, उनसे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, सॉरी एंट्रोपी निकाल सकते हैं किसकी? सिस्टम की, यानी रिएक्शन की, ठीक है ना। प्रॉब्लम है सराउंडिंग। देखिए सराउंडिंग में रिएक्शन नहीं होता बच्चों, सराउंडिंग में कुछ और चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं या डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। और उसमें अगर आप चार ऑप्शंस को देखो, अपने स्टेट चेंजेस को और टेम्परेचर इंक्रीमेंट को, थर्मल डिकम्पोजिशन को, उन चार ऑप्शंस को अगर आप देखो तो उन चार ऑप्शंस में से एक वाहिद ऑप्शन जो कि सराउंडिंग में अप्लाई हो सकता है वो है टेम्परेचर का इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो रिएक्शन करा रहे हो सिस्टम के अंदर वो एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो सकती है। और अगर आप कोई ऐसा रिएक्शन करा रहे हो जो कि एंडोथर्मिक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन होगा, इसकी वजह से एंट्रोपी डाउन हो सकती है। तो सराउंडिंग की अगर आपने एंट्रोपी निकालनी तो देयर इज ओनली वन फैक्टर व्हिच इज एक्चुअली टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर डिपेंड करता है एंथैल्पी चेंज पे। अगर किसी भी चीज की एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर एंथैल्पी चेंज आपके पास पॉजिटिव होगी तो आपके पास क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा, नीचे जाएगा। तो वी नो दैट सराउंडिंग के अंदर जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो आएगा टेम्परेचर की वजह से, और टेम्परेचर में जो आपके पास एंट्रोपी, तो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो एक्चुअली जो रिएक्शन आपके पास हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसकी वजह से चेंज आ रहा है। नाउ यू कैन सी दिस कि आपके पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम भी मौजूद है, आपके पास एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग भी मौजूद है। अगर ये दोनों वैल्यूज आप इस वाली इक्वेशन में पुट करें so you will get something like this, इस तरह का कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस टी हमें परेशान कर रहा है, हमने पूरी इक्वेशन को माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। एंड दिस माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज एक्चुअली गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये पूरी डेरिवेशन आपने याद नहीं करनी है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ये मैंने सिर्फ इसलिए कराई है ताकि आपको पता चल जाए कि गिव्स फ्री एनर्जी आया कहाँ से, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस में नहीं पूछेगा आपसे इसको ड्रॉ करने बताएं, इसको ड्राइव करके बताएं, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो आपको डायरेक्टली आपको गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है और राइट आंसर निकालने हैं, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है, आई कहाँ से, सिर्फ इसलिए
मैंने आपको इसको ड्राइव करके दिखाया है, वरना अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता आप बोलते सर ये आई कहाँ से, फिर मुझे करना पड़ती। तो इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया, और करके दिखाने के बाद मैंने आपको बता दिया इसकी डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, राइट। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये हो गया डन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चों, ये फ्री एनर्जी का यूनिट देख लो, ठीक है ना, और एंट्रोपी का यूनिट देख लो, और टेम्परेचर का यूनिट देख लो। ये तीनों, टेम्परेचर और एंट्रोपी, इन सब की यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन में यूनिट सेम होना जरूरी है। और आप लोग वही मिस्टेक करोगे कैलकुलेशन में कि 1000 से डिवाइड नहीं कराओगे, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, बिला वजह आपका 1 या 2 नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए यूनिट को और से देख लो, यूनिट को सेम करेंगे तो कैलकुलेशन में आंसर सही आएगा। इज दैट राइट बच्चों? Yeah. अब देखें, Yes, दैट्स sir. वेरी सिंपल, यू कैन सी दिस। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एंथैल्पी चेंज अगर आपके पास नेगेटिव हो, एंथैल्पी चेंज अगर आपके पास नेगेटिव हो, दैट मींस आपके पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर गिफ्ट फ्री एनर्जी आपके पास पॉजिटिव हो तो आपके पास रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ this is very easy for us to identify the reaction is spontaneous or not. We just use this formula to find out what gives free energy value, and if it is negative, it is a spontaneous reaction, and if the value is positive, then the reaction is non-spontaneous. Is that clear, bachcho? Yes, sir. Now just look at one of the example. If you just look at the example, they are saying given the data below, calculate gives free energy, right, of the following reaction at 298 Kelvin, right? Whether the reaction is spontaneous or not, you need to identify. Now we just look at over here. We have 2 moles of gases over here and 1 mole of gas over here. That means entropy should be negative of the system, right? But right now we are going to find out what? We are going to find out gas free energy. They already gave us what? Entropy change. देखें ये नेगेटिव ही है ना, आपको पता है, और उसने भी नेगेटिव दिया हुआ है, साथ साथ आपको उसने एंथैल्पी चेंज भी दिया हुआ है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और राइट आंसर निकाल लेंगे। जस्ट लुक एट ओवर हियर, दिस इज द फॉर्मूला। गिव्स फ्री एनर्जी बराबर है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन माइनस टेम्परेचर, इट शुड बी इन केल्विन, रिमेंबर दिस, राइट, एंड डेल्टा एस। अगर आप यहाँ गौर करें तो डेल्टा एस का यूनिट है जूल्स, और डेल्टा जी का जो यूनिट है वो किलो जूल्स है। सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस जूल इनटू किलो जूल्स, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आप जाते हैं सो यू नीड टू डिवाइड इट बाय 1000। तो ये स्पेशल यहाँ पर आपने अपनी जो है ये कॉन्सेंट्रेशन रखनी है। आप डेल्टा एस को 1000 से डिवाइड कराओगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ठीक है। इसको डिवाइड करा के आप इसमें टेम्परेचर से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा जी से इसको सब्ट्रैक्ट और डेल्टा एच से आप इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे, एंड यू विल गेट व्हाट, डेल्टा जी, जिसका यूनिट है किलोजूल मोल इनवर्स। एंड यू कैन सी that the reaction is showing you the delta G value is negative, then the reaction is definitely spontaneous. Right, बच्चों, or not? Yes, sir. This is very easy and very simple calculation, and it will give you almost 3 to 4 marks in the paper, and I think it is very essential to learn right now, so you can easily get 3 to 4 marks in your paper 4, right? So let's talk about some examples. Yes, this is the first example, and you need to solve this question. Yes, this question. This is the question of past papers, so I think you guys are able to solve this right now. Okay, start solving this. Okay, so if you are going to solve this question, so it is having the same formula of standard entropy, which is actually what? आपके पास क्या फॉर्मूला है? आपके पास फॉर्मूला है total entropy change is actually summation of entropy change of product minus summation of entropy change of reactant, right? तो total entropy आपको given है, which is right now 256, ठीक है, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या गिवन है, यू नीड टू फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ C6H12O6 प्लस एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन टू यू, which is right now what? ऑक्सीजन की कितनी है बच्चों? 205, तो 6 into 205, right?
ये आपने फाइंड आउट करना है x and this is 256, right? और उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट आपके पास क्या है? आपके पास है रिएक्टेंट 6 एंट्रोपी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 एंट्रोपी ऑफ वाटर। So it should be 6 into 214 plus 6 into 70, right? कर सकते हो आप इसको फर्दर, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। It will be 6 into 214 plus 6 into 70. It is giving you 1704, right? And x plus 6 into 205, 1230, and that is 256. So 1230 minus 1704, when it goes over there, it will be positive, minus 256. It is giving 218. Right, बच्चों? यही आंसर आ रहा है आपके पास? हाँ जी, मेरा भी है। उसके बाद अगर आपको डेल्टा जी निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी? इट इज ऑलवेज enthalpy change of reaction minus temperature into delta S, right? So enthalpy change is given to you, which is 2879. Temperature is given to you. What is the temperature? The temperature is what they are saying. They are saying the equation for the reaction of carbon to produce glucose is shown. Oh, at 25 degrees. The color. 25. This is the temperature over here. So we need to convert this into Kelvin, and it should be in 298, right? And delta S should be divided by 1000 as well. We know that it is in joules. We need to convert this into kilojoules. So it should be like this, right? सर सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए क्या प्लस करते हैं? 25 सेल्सियस प्लस 273. You need to add 273. Okay. So it is giving us 76 2879 plus 76.288, right? So when we add 2879 over here, it gives us 2955. 2955.28, and this is positive. When it is positive, that means the reaction is non-spontaneous, and we need to heat the reaction, or we need to give continuous heat to this reaction to be occur, right, bachcho, or not? Yes, sir. So what should be the answer of the part C? क्या आंसर होना चाहिए part C का? कौन बताएगा? Because it's non-spontaneous, इसका मतलब है हमें energy देती रहनी होगी no matter what temperature. So you need to answer that. Delta G will be always positive. So whenever it is positive, it shows that the reaction is what? The reaction is actually non-spontaneous, and we cannot do this reaction at any temperature. We require heat for this reaction, right? Right, bachcho? Yes, sir. Yes. It is for 1 mark, so you can say that delta G is positive. So the reaction is non-spontaneous. It requires a specific temperature to start the reaction, right? So this is the way you need to answer. You know everything now. I think the chapter is over. You can write anything about this, and if you are revising your chapter on daily basis. Now let's move towards question number 2. Let's see, can you solve this or not? Let's try.